And we are live. Nidhi is going to join us in a second or two. हाँ यार थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा काम वाम करते हैं हम लोग पब्लिक, सॉरी लेट लेट लिख रहे हो. And Nidhi is here and we're joined by Nishtha who supports Manchester United, and I think the world and Twitter world knows that she supports Manchester United. Nishtha, what's up? What's happening? Thank you for joining. All good, Manas. Always, man. I've always got time for you guys. But yeah, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, and I've just been reminded that the FPL deadline is today, so I'm kind of in like a bad state now. I have to figure out what to do with my life and my team and all of that shit. So ये ये अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्यों लेते हो तुम लोग? मतलब फुटबॉल देख के ऑलरेडी दिमाग खून नहीं चलता है कि अभी एफपीएल भी खेलना है, उसमें एक और बहुत ज़्यादा. But I'll tell you what, like on a serious note, like I hate it. I hate myself when I play FPL. I turn into this horrible person when I play FPL. But I feel like जब से मैं FPL चालू किया है ना खेलना, I feel like I've gotten a better understanding of football. It's yeah, like उसके पहले इतना मेरा life में watching rivals wasn't that big a part of my life. Now I make sure I have to scout everyone, like seriously scout everyone. So I'm just like, चलो शुरू हो जाते हैं, like सबको देखना है हमें. मैं हर She's Nishtha. She's Nishtha. निष्ठा नाम लिखा हुआ है. Who is she तो? What a direct question, bro. What a direct question. नहीं मतलब मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ फिगर आउट करने का कौन हूँ मैं, बट like this is like an existential question. अभी तो सांगरिया पिया भी नहीं है निष्ठा, ये सब बात कर. मानस, नो डोंट स्पिल. मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना हर सीजन के स्टार्ट में सोचता हूँ ना, मतलब एक ऐसा फ्लीटिंग थॉट आता है कि ये सीजन में ना एफपीएल में आई डैबल इनटू इट अ लिटिल बिट. फिर नहीं कर पाता हूँ, बट कभी ना कभी तो करूंगा. बहुत ज्यादा उसके लिए कमिटमेंट चाहिए यार. लाइक it takes up so much of your mental like strength ना. then afterwards you're just like छोड़ो यार, मैच देखते हैं, देखा जाएगा जो होता है after that. I don't understand how people who are like extremely competitive. Okay, there are people who just like भाई पब्लिक ऐसा SPSS पे और टैब्लू पे people have visualizations. I have friends जो बना के बैठे हैं वो लोग. भाई तेरे को इतना क्या? नहीं, ये वही बात है जैसे हम लोग Menace The Monk चलाते हैं निधि रोज. इतना टाइम एंड एफर्ट डाल के. पब्लिक को एफपीएल पसंद है ब्रो. एफपीएल अब तुम लोग सोचो एक टीम के ऊपर कर रहे हो, अगर सारे क्लब्स के ऊपर करने लगे तो क्या हालत हो जाएगी. बाल बचेंगे नहीं सर पे, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन बाल नहीं बचेंगे सर पे ब्रो. मतलब By the way, Nisha, you were so true about the air quality. मैं ना भाग रहा हूँ लास्ट एक महीने से जिम में ट्रेडमिल पे. कल मैं बाहर भागा and I have the worst throat today. Dude, it's horrible. You just sit outside for a while in Bombay. Like you know, like when you swallow saliva and it hurts. Like when you eat anything with water. Oh shit. और मैं एयर क्वालिटी देखा, इट इज पुअर अगेन. भाई इतना क्या चल रहा है यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा. It's depressing stuff, man. Anyway. What questions? I know. नहीं वो जाने दे. ऐसी भाई मतलब मैं यही बोलूंगा कि देख यार, इतनी मुश्किल से एक लड़की मेरे से शादी करने के लिए रेडी हो गई. मतलब शी इज एन एंजल फॉर दैट. अभी उसको छोड़ के मैं, मतलब कम ऑन, लाइक लेट्स बी रियल हियर. देख इसको बोलते हैं कमिटमेंट. 20 मिनट के बाद केटी है मेरा, क्या करे आप लाइव आ गए. अरे मतलब जॉब चेंज कर रहा है. केटी एग्जाम का होता है ना. नॉलेज ट्रांसफर को भी केटी बोलते हैं. हाँ तो अनिरुद्ध प्लीज क्लैरिफाई, लाइक हाँ कॉलेज वाला केटी है, काम वाला केटी है. मेरे को तो कॉलेज वाला केटी आता है दिमाग में. सीरियसली कोई केटी बोला तो फर्स्ट थिंग इज जस्ट लाइक ओह नो, पुअर थिंग. बैक या. बट हाँ यार, अभी देखो हर चीज मेरे को दिल्ली से और बैंगलोर से कंपेयर नहीं करना ना, मतलब हाँ, बट मैं समझ रहा हूँ उधर की एयर क्वालिटी भी खराब है. बट या एक ठंड एंड एयर क्वालिटी, जब भी दिल्ली वाले सुनते हैं ऐसे कान खड़े हो जाते हैं. दे आर लाइक हम फर्स्ट, हम और खाना No dude, like whoever saying now Delhi is worse, ये वो, no, we are as bad currently, so yeah, it's quite bad. Yeah,
मुंबई इज एज बैड एज दिल्ली, और बीच में तो 2-3 दिन वर्स हुए थे। क्या भी बट वर्स। हाँ, निष्ठा आई है तो इधर उधर की बातें तो होती रहती हैं, अच्छा लगता है But ऑलवेज। उसको। Nishtha, coming to football, first question. हाँ चलो। Serious question. Are you looking forward to watching Chelsea tonight or not? क्योंकि भाई एक certain amount of there is a certain amount of intrigue. Let's be honest. Yeah, big time, big time. Like it feels like a whole different team. Like within a Yeah. month's time, पूरा मतलब हुलिया बदल गया है ये क्लब का, टीम का, everything. So I'm very interested in seeing. I mean, obviously in the sense of एक तो मेरे को FPL assets पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, and secondly, I just want to know like how well they are going to do for the rest of the season. एंड नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स तो आई एम एक्सपेक्टिंग देम, मेरे को टॉप 2-3 के नीचे दिखे इन लोग तो मतलब आई विल गो टू लंदन पर्सनली एंड आई आस्क टॉड बोली लाइक क्या चल रहा है तुम्हारा इधर। नो आई मीन That आफ्टर सी इट्स अ वेरी तू रिस्की थिंग ना दैट तू ही इज चेम आल्सो डन की तू लाइक चेंबूर से जू नहीं आती है तू, और तू लंदन मैं से। सी वन टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा ना वो साइड एंड देन आई जस्ट हैव टू टेक अ but फ्लाइट। but Nishtha, shall I trigger some painful memories by ओह गॉड। saying that four-letter word since you mentioned London? Shall I प्लीज do बोल दो, that? Visa. बोल दो अब तो। वीजा। I am so mad, dude. It's not even funny. Like the hold up last year, मैं मर रही थी इंग्लैंड जाने के लिए, and yeah, I mean नसीब में ही नहीं था, I guess. Like more than football, my How cousins can you be was sorry? getting married, so I was very upset. So mm, बहुत बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है यार, मतलब यूके वीजा ने तो लास्ट सीजन जो ड्रामा किया है उसका कोई बहुत हिसाब ही ड्रामे नहीं। हुए हैं। अनिरुद्ध, नो प्रॉब्लम यार, टेक केयर यार, वी कैन विल सी यू सून बैक। दीपेश भाई, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग द मेंबरशिप। Hello, friends. आपको तो वेलकम बोल के भी शर्म आती है, आप तो पार्ट ही ऑफ मेनास द मॉन्क, सो थैंक्स वंस अगेन दिपेश। हम निष्ठा सपोर्ट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, केतुल इज आस्किंग, सो सिंस निष्ठा इज हियर मैनचेस्टर यूनाइटेड यार, निष्ठा वेम्बली एंड ऑल, बड़े लोग मतलब चल क्या रहा है अरे मतलब लीग। इतने टाइम बाद ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है बोलने का, वी आर द फेमस मैन यूनाइटेड एंड वी आर गोइंग टू वेम्बली। सो या and it's very surprising that it's happened. I mean, okay, I ideally shouldn't say I'm very surprised, but I'm very glad that it's happening this early in Ten Hag's reign. And I hope this ends with a trophy. I've kept all my fingers and toes crossed for that. More than the fact that we deserve it, it's been a while. I think Eric Ten Hag deserves it because the way he's just whipped everyone into place. फुल चक दे इंडिया का शाहरुख खान वाइब्स आता है मेरे को उसमें से। जबरदस्त कबीर खान है यार, मतलब वो मुझे ऐसा मुझे बोल स्पेन मत, पोर्चुगल नहीं ऐसा सुनाई बोल देता मत है, मुझे शाहरुख खान सिर्फ एक को, चीज सुनाई देता है, ऐसा मैनचेस्टर बोल मत, यूनाइटेड। शाहरुख खान को बाल अपने बहुत पसंद है, ऐसा बोल मत। अरे मतलब बिना बालों वाला शाहरुख खान है अरे यार नहीं वो नहीं, मतलब। मजाक करो, बट हाँ, बट निष्ठा, देख ऑब्वियसली अगर कोई टीयर्स बनाएगा, अगर कोई प्रायोरिटी बोलेगा, तो कैराबाओ कप, अब हमने भी जीता था लास्ट सीजन लीग कप, बट इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट just फॉर call it मैन what it यूनाइटेड, is, मिकी माउस कप, ठीक है बोल दो। नहीं नहीं, मिकी माउस तो नहीं है, देख मैंने कभी मिकी माउस नहीं बोला, बट फॉर मैन यूनाइटेड, व्हाट इज द Yeah. इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रॉफी? It's not the big, like you mentioned, it's not like the biggest trophy in the world, but it is it's a league trophy, and it's like, and like a historic English trophy. But more than anything else, it's going to really signify the beginning of Eric Ten Hag's very successful stint over here. I'm certain of it. I know I'm not, like, we are all very superstitious when it comes to our football clubs, and we don't want to say it, but really I think Ten Hag is going to be like super successful over here. And the fact that he's getting a trophy in his first year as manager means a lot to all of us. It will reinforce the faith of, believe Yeah. in your manager wala cheese, which has been, I mean, you guys have been very lucky with Klopp finally, after struggling for a while. But हमारा struggle थोड़ा लंबा और चला था. It had like 2-3 people, like I forget names of the managers and the interim managers we've had since Ferguson. तो ये बहुत बड़ा है यार, ये टेन हाग रेन के लिए बहुत बड़ा है, and the optimism in between the fans is just through the roof, man. It's amazing. It's like we are very pumped, very pumped. नहीं, ये तो हम जोशुआ लोग ने भी बहुत बार बोला है
कि Joshua supports the Newcastle, by the way. Sympathy. yeah He's a regular. yeah We want yeah to Oh win a no, trophy too. no, It's no, been yeah. So Joshua not has right always now. been on a channel, but हाँ Newcastle का तो और ज़्यादा टाइम हुआ. And same things you can say about Eddie Howe. जो Eric Ten Hag के बारे में निष्ठा बोले, literally cut copy paste you can say about Eddie Howe. उसने भी जो चक दे किया है, change किया है, वो तो लिटरली दिखता भी थोड़ा शाहरुख की तरह, छावा भी दिखता है. And the entire Tyneside is like crazy right now. So वो तो है ही. मतलब एक 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 बात बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द फिक्चर्स. मैं निष्ठा, इफ यू आर कंफी निष्ठा, मैं Yeah. प्राइवेट चैट पे लिखता हूँ. निधि हाँ तेरे को पहले होगी पूछ लो. तू प्राइवेट हाँ चैट देख सकती है ना निष्ठा? हाँ आई कैन ऑफ कोर्स. क्या चल रहा है? कोई कोई बोल रहा है इतना Oh खर्चा yeah, होने sure. के बाद, ठीक है. इतना खर्चा होने के I've बाद got भी very. हैवर्ट्स क्रॉसबार में ही बॉल मारेगा. हाँ हावर्ड्स के ऊपर तो खर्चा किया ही नहीं है इन लोग ने, छोड़ो यार. सो वो तो पुरानी पुरानी खेल निधि की मूली है निधि वो तो. चैट देख. डू यू वांट टू टच दैट टॉपिक? आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट बट देख मैं कल मुक्तेश के स्ट्रीम पे था. मैं इसमें वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट मेसन ग्रीनवुड, राइट राइट. मैं इस पे यही बोलूंगा कि देख यार, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. या ठीक है. मैं बाय द वे दीपेश हैज गिफ्टेड 5 मेंबरशिप्स, सो थैंक यू दीपेश, थैंक यू सो मच वंस अगेन. भाई तू ही है हमारे मतलब यू आर लाइक द ओपेरा टू मेनिस इन द मॉन्क. You get a membership, you get a membership, you get a membership. Thank you so much, bro. Um, देख यार, मैं आई डोंट नो द केस इनसाइड आउट. आई नो, मैं बस ये बोलूंगा कि इफ ही इज गिल्टी ही शुड नॉट प्ले फॉर मैन यूनाइटेड अगेन. बट मैं लॉयर नहीं हूँ. मैं इस चीज में मैं निधि let Nishtha speak. Let Nishtha speak. मैं I think मैं बस अपना पीस बोल के बंद कर दूंगा क्योंकि आई एम नॉट गोना स्पीक आफ्टर दैट. yeah, सो okay. मैं बस ये बोलूंगा कि भाई इफ ही इज गिल्टी ही शुड नॉट प्ले फॉर मैन यूनाइटेड अगेन. But again, I don't know the intricacies of it because I'm not a lawyer and I've not kept myself completely updated on the case. look, Nishtha, I mean the only. Yeah. Nishtha as a supporter of Manchester United, uh, what are your views about this now that he's being, I think, cleared of the charges, if I'm not wrong? Correct me if I'm wrong. I think the Yeah, charges have been dropped. the charges have been dropped. Yeah. Dropped, exactly. The charges have been dropped. There was a video which surfaced. Proof था काफी, audio video. अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. So Yeah. just as a lady who supports United, what do you think about this now? So the thing is, एक तो charges have been dropped is such a, I mean, ऊपर से किसी को भी लगेगा कि he was wrongly accused and stuff like that. No, there's like a lot of technicality that goes into it, including the fact that certain witnesses refuse to, go forward with their statements and all of that stuff. But जो हुआ and जो leaks हुए, that was for everyone to see. Everyone knows what has happened. So I mean, whether or not the intricacies of law will come up with a verdict, or even if it will go forward in the courts and all of that, it doesn't look like it. But हम कुछ नहीं कर सकते हैं. But it's sad, our experience completely with Greenwood, more so because, I mean, it's such a touchy topic, right? To like think about, and I don't want, personally, I don't want somebody like a Greenwood to play for Manchester United ever, ever again. And he who must not be named, who has left the club and gone now, is also, uh, yeah, I don't want to get into all of that, but I'm sorry, like when it comes to like abuse and assault and all of that stuff, especially against women, there's a lot of power imbalance with these famous footballers and stuff like that. एंड अगर ऐसा कुछ आता है तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक तो सस्पेंशन इज अ नेसेसिटी एंड देन आफ्टरवर्ड्स I just read that like a lot of it will depend whether he ever plays for United again will depend on sponsors. So the best thing that we can do as fans is try and put pressure, saying that we don't want to see something of this sort in our club. So yeah, my thoughts are a little scattered about it because it's just I read it yesterday and just be pissing me off completely to see what has happened. But ठीक है, cool. So I hope to never see that man in a United jersey ever again. So that's my thing. And I Fair. think there's a high chance that will be the case. Yeah,
I hope so. I think so. And Yeah. yeah, yeah. Certain things are beyond मतलब club rivalry and all that. मतलब come on. Yeah. Now, Anuj saying even if he comes back, he won't be the same. I mean, yeah, but like it's not like he's 30, 32 years old. He's 21, 22. And I like from a purely from a business point of view, if I see United will be like, हाँ ठीक है ये मतलब it's not a depreciating asset, right? Even if he can play for like 6 months and then they can offload him in the summer or whatever the hell, they'll probably try and do that because it makes sense in a business side of things. But then there are some things that are bigger than football, some things that are bigger than business Precisely. and money and all Precisely. of that. And this is one of them. So I really hope जो भी इन लोग सोच के कर रहे हैं, even though our track record has not been very good with this, but I hope the better sense prevails at Old Trafford. I hope so. नहीं, but I think Nishtha ने एकदम like very level-headedly she said what she had to, and I'm seeing the comments as well, and I think there are plenty of United supporters in the chat, and they're also saying कि नहीं, bless you, बहुत सारे Yeah, लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए भाई आसपास, yeah, yeah. Yeah. and A yeah, lot of so United fans are. Most of them are so saying that. अब जो होगा we don't know. We just wanted to get Nishtha's opinion on this because she Yeah. supports the club. That is why we are having a chat. Not that we derive happiness speaking about this. Abir has joined the membership. Abir, thank you so much, sir. Welcome Thank you to so much, brother. the family, Menace the Monk family. And हमारे family में तो हम काफी इधर उधर की बात करते हैं, लिवरपूल की बात करते हैं, एंड निधि अनदर गेम वीक हैज कम वेयर वी विल सी द रेड विन प्ले अवे फ्रॉम होम एट वुल्व्स। Yes. भाई मेरे को तो डर Hmm. लग रहा है भाई, दिल धक 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 हो रहा है आजकल तो, हर एक मैच सीम्स स्ट्रेसफुल निधि, मतलब डर देख लगता है। भाई, मैंने तो हम मैंने क्या हमने भी पहले बोला है कि देख यार, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स Before it बेटर। gets better. यस इट विल। यार तू फिक्सचर कैलेंडर देख ले, बिलीव देख ले, देख 2021 में क्या हुआ था ना कि प्लेयर्स बाहर थे, इंजरीज हो गई थी, वो अभी भी है, बट वहां पे ना एटलीस्ट आपको ना स्क्वाड में दिख रहा था कि ट्राई कर रहे हैं, बस पर्सनल नहीं है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिस टीम लुक्स टायर्ड, bereft ऑफ आइडियाज। मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे तू ट्रेडमिल पे भाग भाग के थक जाता है, यू वांट टू फिनिश बट देन यू आर जस्ट वॉकिंग, यू जस्ट वांट टू गेट टू द फिनिश लाइन बिकॉज स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। दैट इज व्हाट इट फील्स लाइक जब इस टीम को मैं देख रहा हूँ। आई देख एज अ फैन तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि यार सब कुछ बदल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, क्लॉप कुछ दवा पिला दे और एवरीवन गेट्स इनटू दैट बीस्ट मोड। बट look at how Fabinho is playing, look at how Trent is playing, look at how Salah is playing, Nunes fit नहीं हुआ है, तीन अटैकर हमारे ऑलरेडी बाहर है, गैक्पो को टाइम लग रहा है, गोमेज तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि इज नॉट द सेम प्लेयर पोस्ट द इंजरी। आई वुड लव टू बी सरप्राइज बट लग नहीं रहा है देख के कि दैट प्लेजेंट सरप्राइज इज कमिंग एनी टाइम सून, सो इट विल गेट वर्स। वुल्व्स विल बी अ टफ गेम, दे आर ऑब्वियसली रेलिगेशन के लिए वो लोग स्क्रैप कर रहे हैं भाई, तो वो तो हमारे लिए चीजें मुश्किल करेंगे ही करेंगे। दे विल प्ले अ लो ब्लॉक। Nishtha has a soft corner for Wolves. If she wants to Of decide that, course. she will. If she wants to, but yeah, Wolves, yeah, मतलब we played them twice recently, और पहले लेग एनफील्ड में एफए कप थर्ड राउंड में they were the better team. They were lucky. We were lucky, sorry, to have a Hmm. replay because of VR decisions. And second leg में हार्वी एलियट स्कोर्ड अ वंडर गोल, उसमें भी वुल्व्स अच्छा ही खेल रहा था। वुल्व्स ने काफी चेंजेस मेक किए थे, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। आई थिंक इस बार वुल्व्स अपनी फुल टीम खिलाएगा। एंड another I think Asian in their team, Mitoma ने तो ब्राइटन के साथ हमारी, आई थिंक Hwang is there with Wolves. लास्ट टाइम Hwang ने गोल मारा था Yeah. एनफील्ड पे, तो आई एम फियरिंग द एशियन कंटिजेंट scoring against us. I think Nidhi is so true यार, it is going to get worse before it gets better, because अभी तो कोनाटे भी नहीं है, तो मैटिप और गोमेज स्टार्ट करेंगे as center backs. Yeah, I have a uh, question, guys. What is going on with Gakpo? Why is it taking him so long to like get used to भाई चार मिडफील्ड ही मैच नहीं हुए है, हैं यार, मिडफील्ड चार ही नहीं मैच है, हुए midfielding? मिडफील्ड में Yes. मिडफील्ड ही नहीं है। वो उसको 4 मैच में हमने 3 पोजीशन खिलाए हैं, एक दो में वो सेंटर फॉरवर्ड खेला है, दो और फॉल्स नाइन, और एक में राइट विंग, एक में लेफ्ट विंग।
and obviously उसका start slow रहा है, इसमें कोई there's no harm in admitting that. But उसका like start तो slow it's ही been रहा the है. same way with Darwin Núñez also. Like it's not translated. But Your signings haven't translated that to Núñez us. like Núñez का finishing is horrible this season, but he's at least getting into those positions. तेरे को कुछ दिख रहा है. और गैक्पो का तो 4 ही मैच हुआ है, तो मतलब 4 हुआ अभी है से यार, क्या मतलब क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन 4-5 हुए. 4 मैच खेला है वो. और मतलब नूनेस तो मतलब वो तो उसको ही नीड्स टू काम डाउन. दैट्स द ओनली थिंग आई वुड हाँ. से अबाउट नूनेस. बाकी सब अच्छा है. वो हड़पड़ा मतलब गोल देख के उसको कुछ तो हो जाता है, जैसे लाइक इट्स लाइक यू लीव अ पपी इन अ गार्डन ना, वो परेशान मतलब इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा, यहाँ से कूद लेता हूँ, वो करता है वो गोल के सामने. तो ही Can I नीड्स टू say काम something? डाउन. I see a lot of parallels with, when pre-World Cup Rashford, where he was, mentally struggling, where you feel like you're doing all the right things and it's not connecting and it's not translating into anything big. I think Darwin Núñez is going through that same. एक और वर्ल्ड कप चाहिए उसके लिए, I guess, like to get him तब going just like Rashford. But वेलकम का डायलॉग याद आ रहा है कि तब तक कोई गेम बजा डालेगा. आगम सिंह नूनस इज द परफेक्ट चेल्सी प्लेयर भाई. अभी वहां पे खाली लाइक जैनेटर की जगह बची है. Their squad is so full right now, including the deadwood that they have to get rid of in the summer. भाई वहां पे मतलब झाड़ू पोछे की भी जगह नहीं है अभी फिलहाल. यार मतलब मेरे को नूनेस का मालूम है क्या लगता है. वर्ल्ड कप के पहले उससे थोड़ा उसका एक स्ट्रीक आया था, फिर वर्ल्ड कप आ गया. वर्ल्ड कप उरुग्वाय का ही बकवास था. अब जब वो आया वापस, वो इंजर्ड रहा है. लाइक ही इज नॉट स्टार्टेड गेम्स आफ्टर द वर्ल्ड कप. ही इज कम ऑन एज सब्स्टिट्यूट. आई थिंक ही इज गोना स्टार्ट कल फॉर श्योर. मेरे को ऐसे लग रहा है. और मेरे को और मतलब सब लोग बोलते हैं हग रहा है, बकवास है. वो कर करके भी 10-11 गोल मार दिए उसने. लाइक इन अ सीजन वेयर आवर टीम इज बैड नाउ. हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी वो उससे 10-12 मार दिए, 10-11 जो जितने भी मार है. मेरे को लग रहा है कि डार्विन, इफ लिवरपूल सीजन हैज टू चेंज ना, डार्विन नूनेस करेगा. बिकॉज ना उसको Bold इंग्लिश आती है, words. ना उसको इंग्लिश आती है, ना उसको चैंट समझ आ रहे है, जस्ट शिट एंडी कैरन. उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है. ही इज इन हिज ओन. वो हर मैच के पहले तेको पता है 30 सेकंड का वीडियो बनाता है, ट्विटर पे डालता है. ही इज नॉट इवन स्टार्टिंग. वो एंड ही इज मेकिंग हिज ओन कोलाज. फिर वो लिवरपूल चेल्सी का बनाया, उसमें चेल्सी की स्पेलिंग गलत लिखी है उसने. मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब एंड आई लव इट. आई लव इट लाइक. चलता फिरता मीम है यार डार्विन नूनेस. आई लव इट. इट्स एक लाइक एक एक पिछले मैच में ना आई थिंक हार्वी एलियट ने किसी को टैकल किया, और वो हार्वी एलियट से जाके ब्राइटन का प्लेयर हार्वी, दैट गाय वाज लाइक गेटिंग इनटू एन आर्गुमेंट विद हार्वी एलियट. न्यूनेस बेंच पे बैठा था, उसको इतना मजा आया द वे ही लाफ्ड. लाइक दैट गाय लव्स प्रॉब्लम. लाइक आई डोंट वांट पीस, आई वांट I प्रॉब्लम्स want ऑलवेज. problems. We call him the Lord of Chaos. वो uh, है, लगी रहे. हाँ, शक्कर बट ही ऐसी यार उसकी. मैं जनरली बोल रहा हूँ. आई थिंक ही विल गो ऑन अ हॉट स्ट्रीक नाउ. मेरे को ऐसा फीलिंग आ Okay. रहा है. एंड देन वो खुद पगला जाएगा, और फिर मतलब सब मतलब. एंड देन एंड व्हेनेवर यू सी, आई डोंट नो व्हेदर यू सी एवरी गेम ऑफ लिवरपूल निष्ठा, कि जब भी नूनेस कुछ भी करता है ना, तो अवे फैंस या होम फैंस नूनेस. बिकॉज एक ही तो बंदा एफर्ट दिखा रहा है हमारी टीम में, वो है डार्विन नूनेस. वो ही Yeah, ऐसा लग रहा है कि कुछ शी वांट्स टू डू समथिंग. निष्ठा, yeah, यू that's वांट टू true. एड्रेस दिस? Yeah, Sachin, listen, it's a bit of a sore spot because I bought it and I'm trying to learn and then I don't have the time to do it, and so I'm really bad at it. So just like, yeah, sorry to disappoint you. I'm just a wannabe drummer. Are you like Joey जो ड्रम्स प्ले करता है फ्रेंड्स में? बस वही है सच. Like, I know how to play like a couple of songs, but that's it for now. Oh, you know how इतना to ही play है a couple मेरा. of songs on the Yeah, drums? अरे बहुत easy like क्या Seven Nation Army and all of that stuff, like भाई that's it. सेवन नेशन आर्मी तो एपिक है. वो तो एपिक Yeah, है it's very भाई. easy on the drums. Very easy. क्या Who are बात है. United playing this week, Nishta? अरे Bro, मैं लगाता to be हूँ, very एक honest, I have सेकंड no idea. एक सेकंड. United are Hey, playing
एक मिनट मैं आई पुट अप द फिक्सचर्स एंड देन लेट्स टॉक फिक्सचर्स वाइज। ओह यार, मैं तो मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट देख देख के मतलब थोड़ा इरिटेट हो गई वापस हूँ अब। फॉरेस्ट है। नहीं नहीं, वापस वापस नहीं है थैंकफुली। वी आर प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस, बट वी प्लेड नॉटिंघम फॉरेस्ट बिटवीन दीज टू गेम्स, सो निधि फिक्चर लिस्ट लगा रहे हैं, हम लोग एक एक गेम के बारे में बात करेंगे। यस। This is what state of play is all about. We speak about the other teams and predict score lines and yeah. Friday night यार लिवरपूल चेल्सी फुलहम तो पैलेस, बहुत मजा आने वाला चेल्सी है। फिल्म। डार्बी है ना ये तो, यस यस। हाँ, वेस्ट लंदन डार्बी। वेस्ट लंदन डार्बी। भाई मैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू चेल्सी वर्सेस फुलहम, मतलब मेरे को देखना या है। आई वांट टू सी क्या करती है चेल्सी, क्योंकि एंजो खेलेगा, मुद्रिक तो ऑब्वियसली खेलेगा। इज जाओ फेलिक्स बैक फ्रॉम सस्पेंशन? हाँ हो आई गया नो, रहेगा। 3 गेम्स ना? 3 games, right? तीन कहाँ हुआ गेम नहीं इनका हुआ? 3 गेम अभी तक? आई I डोंट थिंक सो। don't think I don't think he's back for this one. इसके बाद या वाला नॉट दिस I वन। think he will be back. बेचारा, Uh, सोचना यार, मतलब कब से जैन में साइन किया, फेब हो गया है मतलब हाँ, एक रेकलेस मतलब आधा टैकल। तो चला ही गया उसमें यार। हाँ yeah. और वो भी है एग्जैक्टली, जेम्स एंड चिलवेल। पीरियड में फिर जेम्स इज सस्पेंडेड बैक है। इन ट्रेनिंग, सो यार बट what is she saying? Rashi took me 5 seconds to get that. राशि it took me 5 seconds to get that. पता नहीं। I have no idea what is Denuka saying, but Apna, I am excited to see the championship Benzema against Chelsea, bro. Mitrovic, Mitrovic is I think gonna be key. Andres भी अच्छा खेल रहा है for them, and I ये think भाई काफी Fulham ने ब्लैंक कर गया ना मिट्रोविच, 1-2 गेम्स। हाँ, वो थोड़ा मतलब उसका थोड़ा रफ पैच सा स्टार्ट हो गया है। बट यू नेवर नो यार, ये मतलब लास्ट चेल्सी फुलहम गेम में ही आई थिंक दैट्स हाँ। उसी में तो फिलिक्स को रेड कार्ड मिला था ना। उसका डेब्यू था वो मैच, उसी में तो उसको रेड कार्ड मिला था ना। सो हाँ हाँ हाँ। सो दिस विल बी भाई मैं तो आई या एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आई थिंक चेल्सी होम पे द क्राउड विल बी अप फॉर इट। साइनिंग्स हैं, पता है टेबल में हालत खराब है, बट मैं आई एम नॉट काउंटिंग चेल्सी कंप्लीटली आउट फ्रॉम द टॉप 4 यार। 10 पॉइंट का गैप है, आई नो दैट, बट आई एम नॉट काउंटिंग देम आउट कंप्लीटली। व्हाट यार अबाउट यू गाइस? तुम लोग ने वो मीम देखा है क्या, मतलब ग्रैम पॉटर कमिंग टू ट्रेनिंग और मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब भीड़ है पूरा ऐसा, लाइक मेरे को तो अरे पता भी नहीं लाइनअप क्या होगा भाई चेल्सी का, कौन कौन वो खेलेगा वेम्बली यार, किसको किसको। कितने परफॉर्मेंस खिलाएंगे यार? वो वेम्बली परफॉर्मेंस था ना उसका, उसके उसके उसका मीम बना हुआ था। बट व्हाट डू यू थिंक निष्ठा अबाउट about चेल्सी this game, चांसेस? about Chelsea's transfers, this game? Yeah, this game तो I think Fulham still has a bit of an edge, I would say, over Hmm. Chelsea for me. Chelsea का Hmm. इतना नया squad है, like for it to properly settle in for Graham Potter to get a hang of all of these guys, कहाँ खिलाना है, क्या करना है, it's going to take a little long. So maybe Fulham has got this one, but I won't count, like I won't count Chelsea completely out. वो न्यू प्लेयर्स वाला जो जोश होता है, sometimes it just like connects and works. So Hmm. that may happen, but I think level-headed prediction would be that Fulham probably has it, and I hope Mitrovic gets a goal because I'm sick of his dry spell, which has lasted 3 games, but still it's still a dry spell for Mitrovic. Very awkward to see. Yeah. ड्राई स्पेल की बात मत कर। आई 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 थिंक यार चेल्सी वर्सेस फुलम में चेल्सी फेवरेट है मेरे लिए। Okay. न्यू मैनेजर बाउंस होता है ना, ये ट्रांसफर विंडो बाउंस होगा इनके लिए। आई थिंक व्हाट दे हैव डन, आई थिंक फैंस विल कम नॉट नोइंग कौन कैसा दिखता है, एंड ये कौन है, अरे Hmm. बहुत सही खिल रहा है, अरे चलो लाइक जोश में। नहीं यार, बट आई थिंक चेल्सी हैव रियली रियली गॉन ऑल आउट, एंड निधि ने सही बोला, इफ एनीवन कैन मेक दैट 10 पॉइंट गैप अप, इट्स देम। It's Chelsea. एंड लेट्स रिमेंबर फुलम इज अबव चेल्सी। सो निधि, Yeah, yeah. ये रिजल्ट मतलब इवन अगर फुलम जीत गए तो हमसे भी और दूर जा सकता फुलम Big टेबल game, पे big जाना। game. So I don't know what to predict or what to want actually.
I think draw will be perfect, Nidhi, for us if it happens. For us, yes, but I think Chelsea will win this. Yeah, yeah. अपना क्या लेना देना हाँ हाँ मतलब हाँ। अच्छा, मिट्टे आप वही सानू की आप ठीक है सानू की सानू but it's very awkward seeing Liverpool and Chelsea this middle of the table, like bang in the middle. बहुत I know it's still like a long way to go for the season to end. Blah blah blah. I don't call the league in December, January, February, whatever. But like बहुत फेब में ज्यादा. फेब में तो कर Of course, सकते, of यू course, बोल कैन सकते कॉल हैं. द में तो लीग इन फेब. you I'm can calling call the the league league. leaders. I called the league leaders in January only, but छोड़ो उस बात को. But like, yeah, I mean, this is probably not the positions either Chelsea or Liverpool will end the season with. But it's really Hopefully weird to not see that. lower. Like, Hopefully not lower. no, not lower. I'm sure not. I'm sure. अरे नहीं अभी क्या है ना, नहीं, पोस्ट वर्ल्ड कप हवा निकल गई है थोड़े थोड़े कुछ थोड़े भी हो टीम्स की. सकता है निष्ठा. अगर थियागो इंजर्ड हो गया ना, अभी तो दो मेन सेंटर बैक्स नहीं है, आगे के तीन स्ट्राइकर नहीं है. अगर अरे थियागो कुछ को भी कुछ हो कहने गया, दो. थियागो कुछ हो गया तो खत्म भाई. मैं तो बोल रहा हूँ, फिर तो खत्म ही है, टूट गया मैं यार. 15. खोखला हो चुका हूँ. निष्ठा इज ऑल्सो बिग पुनीत फैन है, बाय द वे. द चैट, आई एम जस्ट Of लेटिंग. course, who isn't? Who isn't? I Dude, mean, I have मतलब been recruited into the cult of Puneet. obviously क्या बात कर रहा है? Sachin, thank you for the super chat, bro. Sachin is saying I learned every Linkin Park song and I am अरे मस्त. self-taught. Sachin मस्त, बहुत later बढ़िया, hit me up on Twitter and send me links on how to like learn बहुत by बढ़िया. himself. आपके तो तो घर भी म्यूजिक है निष्ठा, आप ये सब क्या कर रहे हो? हम तो क्या आपको करें. क्या लिंक्स की जरूरत है? मतलब इतना बड़ा लिंक है तो अब आपको मतलब हाइपर लिंक की क्या I जरूरत है? अब यार क्या what do I say about like but नहीं but like Nishtha, you're I going, need YouTube videos. yeah. But Nishtha, you're going for a Chelsea win? No, she's going for No, I'm Sorry, Fulham. going for a Fulham, Fulham Fulham, win. Fulham win, Fulham, let's Fulham win. go. Let's go. Manas, you and I are going for a Chelsea win. Yes, I say 2-0 Chelsea, Mudryk to cause havoc in the derby. Yes. The और आप लोग कमेंट सेक्शन Ukrainian में लिखिए यूक्रेनियन तेरे नाम उसका द बाल. यूक्रेनियन तेरे नाम. भाई तेरे नाम का पायनियर तो एपीजे अब्दुल कलाम थे. उनका बाल ओरिजिनली ऐसे था. Original तेरे नाम. तो सलमान का, हाँ, ओरिजिनल तेरे नाम वाज एपीजे अब्दुल कलाम. सलमान खान कॉपीड हिम. और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर चेल्सी वर्सेस फुलहम. देन वी विल मूव टू एवर्टन वर्सेस आर्सेनल. Nisha, don't worry, we won't do every game because we won't do 10 games. हम भी थक जाएंगे. थक बट जाओगे पता यार चला सीरियसली. 3 घंटे तक बड़े वाले बैठे करके. हुए. लेस्टर like वन लेस्टर वन का तो I hope there are no fans over here, but Leicester nobody cares about. So 1-1 draw, 1-1 draw. Chelsea, Chelsea 3-1 Fulham, Chelsea yeah, 2-1 am I the to only one Chelsea. saying Fulham have the हाँ, I think game? you're the only Chelsea. one I who's saying it. think you are the only one till now. Till now, you are You the know, only let's one see. saying Fulham. But ठीक है, चलो let's move to Everton versus Arsenal. So Triple H is in the building, Nishtha. Uh, Everton have Sean Sean Dyche. Dyche. और क्या? Sean Dyche, dude, he's got such dad energy now. It's I insane, dude. love Like, Sean Dyche. I you know, love one of Sean those Dyche. games that got like snowed out and this everyone was like in jackets and he rolled up his shirt and walking around. I'm like, it's the अब ऐसा एवर्टन को कोई बचा सकता है तो ऐसा स्ट्रिक्ट एंग्री डैड ही है अब जो कर सकता है. वही फ्रैंक है. लैम्पार्ड का बहुत एडवांटेज ले लिया इन लोगों ने एंड इट्स शॉन डाइच टाइम. बट आई होप दे एडवांटेज गेट ले लिया रेलेगेटेड. मतलब क्या? लीनियंट मामा था क्या मैनेजर, लाइक उसका एडवांटेज ले लिया? उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है ना उसका एडवांटेज उठाया जा सकता है. लाइक उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं. लाइक ये आई डिडंट डू माय होमवर्क बिकॉज माय पार्टनर आल्सो डिडंट डू हिज होमवर्क वाला लुक है उसका. एंड शॉन अच्छा. डाइच को बोला कि मैंने 2 दिन बाद का होमवर्क नहीं किया है तो वो मतलब लपड़ लगा देगा टाइप पर्सन बजाएगा. है. यस, तो यू कांट फक अराउंड विद शॉन डाइच. सो Bro, but I told you about Everton ना मानस. मतलब अभी फॉर एग्जांपल तेरे को एवर्टन के किस्से, मतलब वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है. जैसे उन्होंने जीना हराम कर दिया था उसका. अरे देयर डच मैनेजर यार, मेरे को शक्ल याद है. Koeman, दिस इज द Ronald प्रॉब्लम विद Koeman, मी. Ronald हाँ, Koeman. मेरे को सब याद रहता है, नाम भूल जाता हूँ. रोनाल्ड कूमन. उमर उमर बोलते हैं उसको. हाँ, उमर. लाइक ब्रेन फ्रीज डिसफंक्शन जो भी. सो
रोनाल्ड कूमन को उसने क्रिसमस ट्री पे रेड डेकोरेशंस लगाए थे, उसका जीना हराम कर दिया था, ठीक है। राफा बेनिटेस तो मतलब उसको तो भगा ही दिया। तेरे को पता है शॉन डाइश वाज इन पेरिस लास्ट लास्ट समर, वो लिवरपूल का, ही इज अ लिवरपूल फैन, या तो ही इज द राइट गाय फॉर एवर्टन। बट एवर्टन उसको कितने दिन जिंदा रहने देगा एवर्टन में, वो मैं नहीं जानता हूँ, बट दिस सीजन तो ही इज सेविंग एवर्टन फॉर श्योर। हैविंग सेड सो, ये मैच में मुझे नहीं पता, ये तो सीरी, ये तो मुझे लगता है कि आर्सेनल जीतेगी ये मैच, बट सवाल शॉन डैश इज पक्का पक्का सेविंग एवर्टन। एंड एवर्टन, आई हैव सेड इट बिफोर यार, मतलब एंड आई मीन इट इन अ गुड वे, एवर्टन ना, दे विल सर्वाइव, मतलब दे आर लाइक द कॉकरोचेस ऑफ द प्रीमियर लीग, मतलब एंड आई मीन इट इन अ गुड वे, कि कुछ भी करके यू कैन नॉट वाइप आउट एवर्टन, दे नो हाउ टू सर्वाइव एंड दे विल सर्वाइव। Liverpool fans saying, I mean it in a good way, Everton as a cockroach of February. Yeah, मतलब कि sure, Nidhi. Smooth. मतलब कि निष्ठा, वो कुछ भी करके दे विल सर्वाइव, उनको पता है कैसे सर्वाइव करना है, दे नो दैट आर्ट। Yeah, yeah. यार एवर्टन ना, आई थिंक आई एग्री कि they've got the right manager in शॉन डाइश। एक ये मैच की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को एक वाइल्ड प्रिडिक्शन देना है ये गेम वीक में, मैं बोल रहा हूँ एवर्टन जीत रहा है अगेंस्ट आर्सेनल, बिकॉज वो न्यू मैनेजर बाउंस होता है, उसने बीप टेस्ट कराया चड्डियों में, ठंड में मिड सीजन बीप टेस्ट कराना इज अनहर्ड ऑफ, उसने वो करवाया। Only एंड Sean Dyche. एंड आई थिंक या एग्जैक्टली, और आई थिंक दिस एवर्टन टीम इज वेरी गुड यार, मतलब टू बी इन दिस, जैसे प्रिसाइसली, इज राइट, सर्वाइवल इज एन आर्ट जस्ट लाइक विनिंग। या एंड श्योर शॉन डाइच के बारे में पब्लिक बोलेगी कि मतलब लास्ट सीजन विद बॉर्नली रेलीगेट हुआ, बट उसने बॉर्नली को वो बजट के साथ इतने साल कंपेटिटिव रखा है। एंड Yeah. शॉन डाइच ऑल्सो, लाइक काफी टाइम से जॉब नहीं मिला है उसको, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ही इज हैप्पी टू बी बैक इन द प्रीमियर लीग। आई थिंक ये गेम में न्यू मैनेजर बाउंस देखेगा, और कुछ भी बोल लो, गुडविसन की एटमोस्फेयर जब भी दे वांटेड टू बी गुड ना, इट इज फकिंग गुड। एंड आर्सेनल के अपने ही नर्व्स अलग हैं, वो कप कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, दे हैव पुट ऑल देयर एग्स इन दिस बास्केट व्हिच इज द प्रीमियर लीग नाउ। एंड अभी स्क्वीकी बम टाइम शुरू होगा आर्सेनल का, देख लेना, एवरी गेम नाउ फॉर आर्सेनल इज गोना बी टफ, एवरी गेम is going to be tough for Arsenal now. And this is a tough game for them after the FA Cup break, because Everton are where they are, or also naya manager hai. So don't be surprised if we see an upset here. I am going to be brave, and I'm going brave on the stream. I'm going to say 2-1 Everton. Oh, yeah. Oh wow, I am going for an Arsenal, मेरे को नहीं लगता है कि मतलब ये गेम तो आई थिंक आर्सेनल निकाल लेगा, दे आर ऑन सम रन, ये पक्का, आई फील आर्सेनल। बट निष्ठा, सिटी विनिंग द लीग और आर्सेनल? Arsenal. Manas and I were having that same discussion the other day. I think it's going to be Arsenal for sure. I don't think City this year, they've become a little lax. I think Haaland aa gaya karke, but Arsenal are just like they want it a little more than City, I think. But like every time City has won the league, it's never looked like they wanted it. They've just like walked it. But yeah, Arsenal really want it. So I think it's going to be finally their year. And I think a new manager bounce would have worked for Everton against any other team in the league but Arsenal. Not Arsenal. 2-1 Arsenal to me. शॉन डाइच हैट्रिक बोल रहा है, मतलब क्या आगम। ब्रो बाय द वे, आर्सेनल एवर्टन ने एक बहुत अच्छा जेस्चर किया था, उनका एक फैन था जो ही हैड वर्कड वेरी हार्ड इन गेटिंग पीपल आउट ऑफ यूक्रेन ड्यूरिंग द वॉर, so they were Yeah. playing some, I think this was in pre-season or something, they वो got that guy पेनल्टी किया ना। on, they got that guy on, they gave him 5 minutes and he even scored a penalty, so like great gesture, that was really nice to see. Good on them. निधि, तेरा प्रिडिक्शन क्या है फॉर द गेम? Arsenal win. Arsenal win. I think a lot of people, I think all of them are going for Arsenal. एक दो एवर्टन विन आया। Everton है, हाँ. Everton final Arsenal मैच है, ठीक है, very nice. हाँ मतलब ये तो मतलब ठीक है, ले लिया, बट ओके, 1-0 एवर्टन। कसम 5-0, ओके 5-0 तो Dude, आर्सेनल का भी करना मुश्किल है, मतलब 5-0 unless is half the players don't get off the bus, that's not happening.
Yeah, deep down, yaar, deep down, I don't want Everton to get relegated at all No, because not at all. हमारी तो एक ही डार्बी है, ठीक है। अब वो भी अगर आप छीन लोगे हमसे तो मतलब क्या वो एक बचेगा? थोड़ा रोमांटिक जो हम हैं, मतलब वो गुडिसन पे मैच है, बाकी पब्लिक तो बोलते हैं हाँ गुडिसन ही तो हमारी फट ली थी भाई, गुडिसन है माँ कसम अबे है ये वो, तो वो मेरे को हाइप अच्छा लगता है। सो आई वांट एवर्टन टू बी इन द प्रीमियर लीग ऑनेस्टली। दीदी यू वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, वी कैन टेक ब्राइटन के बारे में बात करना है जस्ट ऊपर ऊपर से, या यू वांट टू टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड पैलेस? नहीं, थोड़ा सा ब्राइटन, आई थिंक ब्राइटन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। ब्राइटन तो अभी बहुत ही अच्छा खेल रहा है। आई डेफिनेटली थिंक ब्राइटन इज टेकिंग दिस। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मिटोमा काइसेडो वापस आ गया है स्क्वाड में, उसको तो ऑब्वियसली डिजर्बी ने बोल दिया। बाय द वे, ये तुम लोगों को पता है ना, डिजर्बी टोल्ड काइसेडो कि तू घर पे जा and you're not going to come out of the house. They are literally like, you till the transfer window deadline day, don't come out of the house. I'm not going to put you in any squad, not on the bench. You just clear your mind, whatever. I think what he told him was कि तेरे को मैं समर में जाने दूंगा, अभी तो नहीं जाने दूंगा. And then, and now he is apparently apologized and he's back and all that. So अभी तो he is also back. McAllister है, Mitoma तो भाई find of the season for me. Mitoma. Karu Mitoma. Mitoma, find of the season for me. What a Brilliant guy. player. I love how Brighton play football. So ये तो I think straightforward है यार. I think an easy 2-0 victory for Brighton here मेरे हिसाब से. काफी लोग वही लिख रहे हैं 2-0, 3-1, 3-0। Yeah. कैन लिख रहा है 11-0 ब्राइटन, बट ठीक है। मतलब निष्ठा की प्रिडिक्शन लेंगे, बट 414 पीपल वाचिंग अस, 40 मिनट्स हो गए, बोला नहीं अभी तक। गाइस स्ट्रीम को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क इफ यू हैवंट, and if you want to see more of Nishtha on State of Play, please write Nishtha OP in the chat so that she joins us अरे भाई. every निष्ठा was Friday for this. निष्ठा was one of the first people we did. पहले हम लोग लाइव्स नहीं करते, निष्ठा के साथ we did a live first, बहुत पहले। उस टाइम हम लोग को ऐसा 20 लोग देखते थे, but हाँ, yeah, so Dude, I we are had so much fun with you guys, with these people watching, with those four people watching. I don't care if it's nobody watching. Let's just like get on a Zoom call and talk, because I absolutely love talking to you guys and just shooting the shit. Yeah, it was damn good fun, bro. Niष्ठा OP, of course, of course. ये बाप रे, बहुत प्रेशर आ रहा है अभी. हाँ, तो फ्राइडे को आना पड़ेगा अभी। हाँ, Yes, yes. क्यों are नहीं? you feeling like थोड़ा एरिक्टन है निष्ठा? थोड़ा प्रेशर है, लोग कसम बहुत बहुत ज्यादा बहुत प्रेशर है. I think he's chiller that way. He's just like bring on more pressure, and I'm just like अरे भाई थोड़ा. जैसी मेरे को ब्रेकिंग Yikes. बैड का मन देखने का मन करता है, जैसे ही मैं 10 को देखता हूँ। आई फील लाइक वाचिंग ब्रेकिंग बैड अगेन। Dude, this is what is No, that's me. oh नहीं yeah, नहीं, your Insta post. Yeah. अच्छा, my sorry. t-shirt ना chubby guys cuddle better, so Nice. चलो but हाँ, फिर मैन यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस पे आते हैं। अब आओ असली पे। अब आओ असली पे। निष्ठा क्या लगता है मैन अरे थोड़े यूनाइटेड पैलेस, पैट्रिक वियरा थोड़े इंजरीज returning है. to Old Trafford? Uh, Crystal Palace, it's always a little hard with Crystal Palace, but we are playing at home, but we have injuries. So I am just going for like a nice stalemate. I don't think anyone's winning this one. Really? Sorry for being boring. Yeah, sorry for being boring, but yeah, I think unless Rashford thinks like कुछ करना है life में and all of that stuff. क्या Because बोल हमारा रहे यार? midfield में बहुत injuries है यार. I don't see us playing as smoothly as we did a while back. The thing is, and I want to talk about this specifically, our fixture congestion is so bad right now. It's so bad. We are playing, I think, this month we are playing a game every 3 days, and we are racking up the injuries. And we don't have much of a contingency plan. We literally had to make like signings last second, Sabitzer, almost last second, to kind of like make sure that we have players going into the next few games in this month. And we've got like a final coming up. We've got too much happening. Yeah. So, but Ten Hag is like a very strict manager where he wants performances without fail every single time. Doesn't matter.
So I'm expecting us to not go down easily or lose this one, but I don't see us like winning this one very convincingly. Yeah. I don't think so. Sabitzer is he available? वो उसका पेपर वर्क वगैरह I सब think कुछ he हो गया है ना? should. Yeah, we announced him properly, so I think he should be available. You see him playing? So Will I नीचे do. लिख Hmm. public वो will सैनिटाइजर will बोल रहे हैं something. sanitizer play. Sabitzer is sanitizer. Sanitizer. Yeah, I love autocorrect, man. It's just perfect. नहीं अरे Yeah, no, it's okay. पब्लिक उसको सैनिटाइजर बुलाता है अभी। अभी वो नाम रख दिया गया नाम है. बन गया अभी सैनिटाइजर। सैबिटाइजर किसी ने उस दिन बाबा की टीम Sanitizer. में सैबिटाइजर बोला था। Sabotager sounds like a German gun. But Or like a do you think he'll play? metal band. Yeah, I हाँ, hope yeah, so. I that. really hope so. I think he's available. He should. Hmm. He should be able to. Yeah, but यार I am the very double interested in seeing this. the double pivot of Casemiro and Sabitzer आगे Bruno, that's like so appetizing। मतलब अगर आप Sabitzer और Yeah. Casemiro साथ में is like so good यार। मतलब I don't mean to say this in a bad way at all, but अगर Eriksen injured नहीं होता शायद से ये signing नहीं होती। Yes. Yeah. Maybe So it's a blessing in disguise, but वही Eriksen being वही out till May is not a very fun prospect. but the fact that you've got a Yes, I would know. you got Sabitzer and Casemiro, bro. Like that's Yeah. that's a Yeah. fucking good midfield. And Yeah. एरिक टेन Yeah. हैग ने ये 6 महीने में मिडफील्ड करवा दी है जो ओले गनर सोल्शर, मैकटोमिनी और फ्रेड के साथ ही खेल रहा था 2-3 साल। You know that टेन हैग ने Mugfred, when छह Eriksen got injured, I was like, Wapis Mugfred, like I am getting horrible war flashbacks. Like it was fine while it lasted because we didn't have an option and they were doing something whatever. मुझे जिंदगी में वापस मकफ्रेड नहीं चाहिए मेरे like lineup में. It's bad. And you know what? McFred was also pulling Fred back so much. Like you've seen like a whole new Fred in the last few months. Like he's a revelation off the bench, यार. मतलब क्या खेल रहा है ये आदमी? क्या खेल रहा है? That midfield, the McFred pivot was holding him back so hard. Like wow, it's almost like we made a new signing, but we've not. Like it's a whole new player for us. फ्रेड इज chaos लिखते हैं। Fred is clear. I love it. यार मैं सिर्फ एक चीज ये जोएल का बोलना चाहता हूँ यार कि मतलब एक सेकंड बेल बजी है मैं इसका I mean, Joel, But I don't know whether you were talking about Liverpool Henderson or United Henderson at he's this point. no, he's Jordan Henderson अपना Liverpool. But Nishtha, मानस तो आके उसको करेगा. But right now, do you see एक question में I want to ask is this. See, Eric Ten Hag का he I feel that he trusts a core of players. Yes. Right? और वो अभी because of like you said fixture congestion है और वो सब कुछ है. Are you worrying that might it might so running them ragged तो it's like a superlative, but देखो लगता है क्या कि थोड़ा सा इंजरी इश्यूज हो सकता है because these guys are being asked to play so much and intensity इतना ज्यादा है. Big time, yeah, big time. I mean, I'm sure Ten Hag has a plan in mind and he's not a novice. He knows that ये Not इतना winging it. congestion में थोड़ी वाट लगेगी. But I don't honestly see him rotating that much, yeah, and that's a bit of a worry for me, That's and the that's the thing. only worry I've had about Ten Hag in his entire reign over here. He's handled everything perfectly, but I don't see him rotating as much. I really hope he does now, and some sense prevails. The thing is, everything is important for us. We need a trophy, but we also want to make sure that we get top four. We also want to make sure that we don't drop games in the Premier League. Yeah. तो अब तुम प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? लाइक डू यू वांट सिल्वरवेयर और डू यू वांट टू मेक श्योर यू गेट इनटू चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन? कि क्या करना है एग्जैक्टली? सो दैट इज गोइंग टू बी an interesting prospect for Ten Hag, but a very worrying prospect for all of us. कि like लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, but I trust him to do something out of it. Okay, obviously I don't wish an injury, but who do you think is one in मतलब ऐसा एक एरिया जहाँ पे यूनाइटेड के पास डेप्थ उतना नहीं है जितना होना चाहिए था? थोड़ा अभी तक मिडफील्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है तो सही. I'm not going to deny that some bits of defense and a lot in midfield
if I see anybody getting injured now, it's somebody from the midfield only, because the way we are playing, the intensity that we are playing at, and the Right. frequency that we are going to be playing at, it's the midfield that's going to take the brunt of most of this mark. So I'm very worried about Bruno. But even though Bruno doesn't really get injured a lot, touch wood, everything. But like I worry about Bruno. I worry about Casemiro. I worry about Varane. Um, Luke Shaw not as much, but yeah, I worry about these guys, and I don't want anything to happen to Lisandro Martinez ever. Of course. Of Yeah, course. somebody saying Bruno injury, Cassie injury, Rashi injury, season over. True, absolutely. Hell अब yes. उतनी इंजरीज होंगी तो यार किसी का भी सीजन ओवर खत्म हो है जाएगा, ये तो सीजन खत्म. ये तो आप क्या बात कर रहे हो यार, ऑब्वियसली. Yeah, that's it. हाँ, मानस तो So, कुछ what बोल are रहा you था. guys predicting there, though? Like, नहीं यार, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा था कि यार आप लिवरपूल फैन हो और आप अपने कैप्टन को क्लाउन वाउन बोल रहे हो, क्या है ये? मतलब ये मतलब इतना इतना सुख दिया है हमें ओवर द इयर्स, हैप्पी डेज दिए हैं, वन बैड सीजन, एंड we are better than this. That's all that I wanted to say. But anyway, I can't be the voice, and I don't want to be the voice of all Liverpool supporters. But I just found that distasteful. अच्छा नहीं लगता as a Liverpool fan when we are not as uh, सक्सेसफुल ओवर द इयर्स ना जितने दूसरे टीम्स हैव बीन. हमने तो अपने लाइफ टाइम में एक ही लीग टाइटल देखा है भाई, और वो कैप्टन था. अब उसको भी आप ऐसे डिस करने लगोगे तो क्या मतलब? एनीवे, दैट्स तुम लोग का जस्ट. सीएल कैप्टन भी था, राइट? नहीं. या, हाँ हाँ. ऑफ कोर्स. हाँ, मतलब क्या चाहिए तुम लोग यार, क्यों उसको गाली दे रहे हो? एक्चुअली मेरा कह प्रिडिक्शंस. दो. हाँ, तेरा क्या है वही तू जान दे. वो है ना. प्रिडिक्शंस. Egan is saying, as a United fan, you should trust your team a little more. Bro, this is the most I've trusted a manager and a team since Sir Alex. But I'm not blind, and I am not optimism ki dukaan. I am being a realist over here. I can't trust more than this. Like, इससे ज्यादा नहीं होगा मुझसे. इससे ज्यादा ट्रस्ट तो कॉलेज डेज ने बता दिए, किसी पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिल मैं टूटता मेरे है. माँ बाप पे ना करूँ इससे ज्यादा ट्रस्ट बाबा. ये तो like this is the छोड़ pinnacle दिया of my मैंने. trust. छोड़ दिया छोड़ मैंने लोगों को मैंने व्हाट्सएप करके डिस्टर्ब करना. डिस्टर्ब चन्ना करना. मेरे या मेरे. एंड दैट एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट. छोड़ दिया. चलो, प्रेडिक्शंस. मानस, क्या प्रेडिक्शन है मैन यूनाइटेड वर्सेस पैलेस? Oh, I think it's going to be a cagey affair. I'm going for 1-0 Man United. वाह. I'm going for 1-1 Man United and Crystal Palace. So you're going for a yeah, I'm going for a safe draw. draw. Safe. I think I Nidhi? think I think I think Palace will score for sure. Already Palace Wolves गोल ही तो से. मारेगा. वूल्स तो मारेगा ही यार, उसमें क्या है. मतलब I think Palace will score for sure. स्कोर लाइन पता नहीं यार, बट आई थिंक यूनाइटेड विल विन दिस. आई थिंक, बट हाँ, मतलब एकदम मतलब वो बोलते हैं ना कि हालत खराब हो जाएगी. इट विल बी लाइक स्क्वीकी बम टाइम, बट यूनाइटेड Squeaky विल mountain, विन. proper. Yeah. But United will win. So I hope we do, 2-1. but I don't Something like have that. hopes. 3-2 का तो पता Agam नहीं यार is मेरे को. Agam is hell bent on manager scoring. Sean Dyche hat-trick, वो अभी Patrick Vieira brace. Patrick प्लीज, Evans. उसका आगम is like that meme ना, वो फ्राइडे वाला meme. He's already in that mood. हाँ. Friday. फ्राइडे आया. He's ये नहीं, already in लेकिन that आइडिया mood. अच्छा, मैनेजर्स को खिलाने का आपस में मजा आएगा. देखो मतलब शॉन डाइस, आई थिंक लाइक इट विल बी इंटरेस्टिंग. नहीं कौन सा नहीं. मैनेजर? आर्टेटा तो लड़ लेगा. आर्टेटा और क्लॉप तो लड़ लेंगे किसी से. आई थिंक दे क्लॉप विल. क्लॉप खुद का सिस्टम अभी नहीं खेल पाएगा, जितना वो सुट्टा मारता है हाँ, ना, अभी नहीं वो खेल पाएगा वो. वो ऐसा उसको राइट बैक पे डाल दिया ना, तो ऐसा साइड में खड़े होकर ऐसे सुट्टा मारेगा और हंसेगा. Hey, Klopp seems like a guy who just come up like running towards you and glare at you, but हाथ नहीं उठाएगा वैसा. हाँ, मारेगा नहीं. हाँ, ऐसे Like, दांत दिखाएगा बस, ऐसा हाँ, दांत मतलब. दिखाएगा. That GIF, man, I love it. I love that GIF. इतना यूज किया the ना मैंने लाइफ में. the best Klopp GIF is that कहो ना प्यारे वाला. टिडिंग टिडिंग टिडिंग. वो हाँ. किसी ने वो मस्त है. एपिक मस्त था वो. मस्त.
Arey, Akrit said this like some 6 times. All this midfield to get bullied by Tudrid Gavi and Busquets. अरे ठीक है ना भाई, चल ना यार अभी like मेरे को प्रीमियर लीग से ज्यादा मतलब है, छोड़ो. आएंगे आएंगे आएंगे, यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग जब स्टार्ट होगा उस पे भी आएंगे, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल Whatever, प्रीमियर लीग की बात मारो. कर रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल तो प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। हाँ, बट मानस, तेरा प्रेडिक्शन क्या है? I said 1-0 Manchester United against Crystal Palace. हाँ, तो वी आर गोइंग फॉर अ विन, निष्ठा इज प्लेइंग सेफ विद अ ड्रॉ। और Yes. अब आते हैं वुल्व्स Sorry, लिवरपूल, but क्या reverse फायदा है? jinxing works really well on your channel, so. हाँ, तो उसने पहले भी Fuck यहाँ off, पे okay, तांत्रिक fuck off, विद्या, Nishtha. तांत्रिक विद्या पहले भी किया है उसने। I remember, I नहीं, remember. that was. चांस ही नहीं है, क्या तुम लोग मार दोगे? यो, 2-0 Manchester United. भग. Dude, I mean, पहले I भी किया उसने। genuinely thought we did have a chance, okay, but अब तुम लोग ने उसको रिवर्स जिंक्स का नाम दे ही दिया है, तो टाइम टू भाई, कैपिटलाइज ऑन मैंने तेरे को मिडफील्ड देख के ही बोल दिया था निष्ठा उस दिन कि कुछ नहीं होने वाला है, वी गोना लूज दिस, तेरे को याद I should होगा listen to you guys more often, क्या yeah. था उस शायद। दिन Henderson, Milner, Elliott at Old Trafford was our midfield. हाँ, ठीक है, तो मैंने मिडफील्ड देख के ही बोल दिया था भाई तेरे को कि कुछ नहीं है, ये खत्म है कहानी, और वही हुआ। बट अभी आते हैं वुल्व्स और लिवरपूल। अब इसके बारे में क्या बोले, इसके बारे में तो हम कल बात करेंगे और कल भी बात It's करेंगे। your year to play Wolves several times, right? There was 2 years ago. It was like every other week we were playing Wolves in like some competition or the other, and it looks like you guys are just playing Wolves since the last 2 months. हाँ, I मानस, think third या fourth meeting in last 2 months है. मैं Yeah. तेरे से ना वुल्व्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वुल्व्स का अगर तू मिडफील्ड देखेगा, रूबेन नेवेस, मैथ्यूस नूनेस एंड हु एल्स इज देयर, भाई उनकी जाओ आगे, मुटीनियो. Jao Martino, जॉ मटीने तो बेंच पे रहता है मोस्टली, मगर भाई उनका फॉरवर्ड लाइन इज गुड, ठीक है। चल, अडामा ट्राओरे का फिनिशिंग, पाब्लो सराबिया भी अभी साइन किया, एग्जैक्टली। yeah. यार, हाउ आर वुल्व्स इन दिस पोजीशन? बिकॉज अगर मैं टेबल देखूं, आई They जस्ट have पिक not द टेबल, scored goals, Nidhi. They have scored single digits, I think. but Yeah. what is your take on how is Wolves like just flirting with relegation? Like, how has this happened? If you guys can No, talk a little bit about it's this. because to देखना they've scored what? They've scored 12 goals. They've conceded 30, Nidhi. वो लोग ने 20 मैच में 12 गोल मारे हैं भाई. टीम तो बहुत अच्छी है यार उनकी, लेकिन On वही है. paper, they are so good, but like I think their previous manager, what's his name, yaar? He just like ब्रूनो लाज, messed the squad. Bruno Lage. ब्रूनो लाज। He wasn't good. He wasn't a good fit for Wolves as a manager, in my opinion, at all. And Hakuna bhi hai. But I think new manager bounce is happening for sure. At least they are above the relegation now. And I think with the matches in hand, थोड़ा ऐसा 15-16 पे खत्म करेंगे, which is going to be a big deal for them. They don't deserve to be going down with that kind of a squad, honestly. Yeah, But then even exactly. Everton is in the relegation zone, so I don't know. This is like a very crazy season. Like, क्या ही बोलने का. But at least like now, Lopetegui is actually making use of the players the way they are supposed to. They are not. There's still some friction, I think, especially in their midfield, like you were saying. थोड़ा Hmm. finishing वगैरह का problem है. And I think once they fix those issues in a couple of games, it's going to be good. But yeah, looking at 30 goals, I didn't know they conceded 30 goals. Jose Sarr deserves better. Jose Sarr does not deserve this kind of goal tally against his name, man. It's नहीं, horrible. He's quite good. नहीं, but Achilles Gaming, first of all, thank you, brother, for rejoining the membership. Appreciated, यार. Thank you. Welcome back to the family. But यार, क्लियर कट बात ये है कि राहुल जिमेनेज़ की जो इंजरी हुई है, उसके बाद ही इज नॉट द सेम प्लेयर. He's not. Yeah. Diego Costa was bought in to score those goals. वो इंजर्ड हो गया. ही इज नॉट द सेम प्लेयर. सो गोल्स ही नहीं आ रहे हैं. वो पेड्रो नेटो मारता था, इफ यू रिमेम्बर, वहां से गोल्स Yeah. आने कम हो गए. अडामा ट्रायोरे लास्ट सीजन बार्सिलोना चले गया, उसके बाद वापस आया, वो सेम नहीं है. सो वो पूरा जो गोल्स आते थे आपके ट्रायोरे के, नेटो के, हिमेनेस के, वो नहीं आ रहे. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग व्हाई वुल्व्स इज स्ट्रगलिंग, निधि, उनका Hmm. कैप्टन कॉनर कोडी एवर्टन चले गया मिड सीजन. वो Oh, स्टार्टिंग that में was a नहीं. bad one.
He's मतलब had a Weird. fallout with Laj, I think. नहीं, Yeah, yeah. बट द पॉइंट इज, अगर आपका कैप्टन ऑन लोन एवर्टन चले गया जो आपसे नीचे है, मतलब इट जस्ट शोज समथिंग वाज नॉट राइट. सो अलॉट पोडेंस भी, हाँ पोडेंस भी है, पोडेंस के भी गोल्स कम हो गए. सो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, हिमेनेज, मैनेजर चेंज, कॉनर कोडी लीविंग, आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे गेट रेलेगेटेड ब्रो. मतलब आई डोंट नो, मेरे कहने का मतलब यही था कि भाई इट जस्ट फील्स वियर्ड लुकिंग एट देयर स्क्वाड कि ये लोग इतना नीचे हैं. दैट्स द थिंग. It's very sad, honestly. बाकी And I think Laj had lost the dressing room quite hard. मतलब या इतना कि तुम 100%. कोडी जैसे affable-ish strong guy को you guys are letting him go. It's really sad. So it's going to take a while for I think Wolves to लोपेटेगुई. consolidate themselves. But the thing is, the two games that they played against you guys, I can actually see like some amount of spark coming back into the दैट Wolves इज बिकॉज दे squad. आर प्लेइंग अगेंस्ट अस. या I mean, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एट दिस पॉइंट लिवरपूल के साथ खेल लो तो बस आ जाएगा यार. मतलब लोपेटेगी इज मतलब अभी like अभी smacking his अभी lips in भाई anticipation. अभी अभी वी हैव बिकम द श्रीलंका टू एवरीवन्स इंडिया. मतलब जब थोड़ा मोराल ऊपर करना है तो हम हमारे साथ मैच खेल लो और अपना मोराल ऊपर कर लो, जैसे श्रीलंका Yeah. को हम बुला के हालत खराब करते हैं हर बार. But somebody बट अभी mentioned, Joshua mentioned, sorry, guys. Joshua mentioned that Ruben Neves is a great midfielder. Why Ruben Neves is the only one in this team who's actually giving a fuck at this point of time. So yeah, it matters, but I think वो अकेला he can't do anything. उनके Ruben साइनिंग्स भी Neves. ऑफ हुए ना, समेडो की इतना पैसा बहुत खर्चा यार. किया, लाइक अरे who did they sign before Costa who got injured in the game in the debut that game? Gungrae curly hair striker Fabio someone, if you remember, Yeah, the yeah, striker. मतलब yeah. इवन ही उस पे 40 odd million खर्चा किया एंड कंप्लीट फेलियर भाई. Sasa they had कंप्लीट. signed. Sasa got injured like minutes into his debut game. Did his ACL in. दैट्स बैड. एंड Yeah, देन वही, मतलब ये बात भी सही है, आफ्टर आफ्टर कॉनर कोडी लीविंग फैबियो सिल्वा, हाँ ये बंदे के बारे में जो जो स्ट्राइकर की Fabio बात कर रहे Silva. थे, इस पे Yeah, भी बहुत पैसा खर्चा किया एंड yeah. नथिंग इज हैपेंड. सो मतलब आई थिंक दे वेंट फॉर अ, यू नो, लाइक Portuguese slash South American whatever revolution which worked for a bit. अभी वो Till ऊपर it नीचे हो didn't. गया वो पूरा. निधि, Yeah. can we get something from this game because the way we are playing बहुत मुश्किल लग रहा है. कैन यस, बट वही बात है कि मतलब We'll हम, know. हाँ कि मतलब जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, जिस हिसाब से बिलीव है इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, आई थिंक अगर मान ले पता चला कि नूनेज ने कुछ ऐसा अतरंगी गोल मार दिया या साला ने ऐसा मतलब Nunes, ड्रिबल कर, Nunes, हाँ Nunes. हाँ साला ने कुछ ड्रिबल करके मार दिया मेरे को तो देख टीम विक्ट्री तो ऑनेस्टली, एंड आई फील बैड, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना प्रेडिक्ट अ लॉस फॉर माय ओन टीम, बट मुश्किल लग रहा है यार, जो जो हालत है हमारी. सो आई फील इट विल कम डाउन टू moments, and the same for wolves are also uh, Hmm. they look they, I mean wolves को देख के लगता है ना कि they have spread themselves too thin, which is Yeah, weird because yeah. it should not happen, because it's not like I आप बहुत ज्यादा competitions में हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. बट आई फील दैट वुल्स को भी देख के वैसे ही लग रहा है, हमको भी देख के वैसे ही लग रहा है. आई एम जस्ट होपिंग कि हमारा मोमेंट इज बेटर देन देयर मोमेंट एंड वी विन, बिकॉज बाय गॉड वी नीड 3 points. Yeah, we are desperate at the moment to get any sort of semblance of positivity going on over here. ब्राइटन के अगेंस्ट एफए कप मैच जब भी हम लोग ने लीड ली थी तो मेरे को लगा था कि यार, एंड वी आर प्लेइंग ओके इन द फर्स्ट हाफ, आई वाज लाइक मे बी समथिंग, कुछ स्पार्क दिखा है, बट That's great. कुछ नहीं. सेकेंड हाफ में वापस आ गए हम लोग जैसे हम लोग खेलते हैं. बट यार, आई वांट, यू नो व्हाट निधि, व्हाट आई वांट इन दिस गेम, आई वांट नूनेस टू स्टार्ट. And I want to, and I want him just, I'll just tell him, भाई भाग तू भाग, तेरे को 40 यार्ड से शॉट मारना है मार, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. If you feel you have channeled your inner Messi tonight, dribble, make something happen, excite me.
as a Liverpool fan, I have not been excited this season at all watching us play. I want to like get up and be like, oh fuck, क्या मस्त था. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई ये सीजन. And निधि तूने हजारों बार बोला है ये हमारे लाइव स्ट्रीम में कि आई वांट अ गुड परफॉर्मेंस, यू नो. वी हैव नॉट सीन अ गुड परफॉर्मेंस सिंस मैन सिटी व्हेन वी बीट देम Hmm. 1-0 ब्रो. एंड दैट सीम्स लाइक एजेस बैक यार. इट्स लाइक नवंबर आई थिंक. फेब में आ गए हम लोग. मतलब आई थिंक वर्ल्ड कप के नापोली पहले एंड साउथहैम्पटन वर्ल्ड कप के हाँ पहले साउथहैम्पटन वाज द लास्ट गुड परफॉर्मेंस हाँ मतलब आई वोंट इवन कॉल दैट अ गुड परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट. मतलब जीत गए हम लोग. कंपैरेटिवली. हाँ हाँ कंपैरेटिवली तो निधि अभी तो कुछ भी गुड परफॉर्मेंस हो सकता है. और इस सब के बीच में लिवरपूल ट्विटर फुल नॉस्टैल्जिया में डालता है. दिस डे 3 इयर्स बैक वी स्मैश दिस टीम 4. अरे पता है भाई क्यों कर रहा है हमारे अलग साथ ही ये. वो अलग ही उनके नशे चल रहे हैं, मतलब वो अलग ही दे आर रबिंग इट इन फॉर सम रीजन. निधि बट Yeah, man. विल यू स्टार्ट नाबी केटा. यस, यस, 100%. Bhai, he is leaving in the summer, and I'm not saying Naby Keita is the solution to all our problems. मैंने पहले भी बोला है, the issue here is not that Naby Keita is the solution to our problems. The problem is that Naby Keita is starting to look like the solution. That's the issue, right? So भाई अखिलेश अपना गेमिंग यार, आप अपना कमेंट फिर से डाल दीजिए, जरूर लेंगे हम. कभी कभी मिस हो जाता है, प्लीज बुरा मत मानो. So yeah, even I think after Thiago right now, Navigator is the best midfielder right. और भाई वो कभी भी इंजर्ड होने वाला है. मतलब इट्स लाइक अ स्टॉक दैट यू नो इज गोइंग टू फॉल, तो आप कर लो शॉर्ट टाइम रहते और थोड़ा पैसा बना लो. सो दैट्स माय फीलिंग विद नेविगेटर. चुपचाप जब तक फिट है खिला लो. ही इज गोइंग टू ऐड समथिंग राइट नाउ. कंपैरिजन में तो बेटर ही है यार वो. हाँ बट उस वो तो मैं एग्री करता हूँ. बट उस सब के बीच में भी ना हमारी परफॉर्मेंस बेटर हुई है ना अपन जीते हैं. हम लोग हारे ही हैं. तो एरर नहीं कर रहा है ना, मतलब एकदम स्ट्रेट एरर तो नहीं कर रहा है ना. वो कर ही नहीं रहा है कुछ, इसलिए एरर नहीं हो रहा है. Which is better than making an error नहीं, आई वुड that रादर हैव leads समवन to a मेक एन goal. एरर. आई वुड रादर हैव Uh, समवन मेक एन एरर. एटलीस्ट like वो I कोशिश would तो कर let me address it. I would right now. I love Henderson, but right now I would 200% start Navigator over Jordan Henderson. 200%. रहा है. नाबी केटा तो मैं अभी मतलब क्या ही बोलूं. आई बट आई थिंक ये गेम में वी विल. निधि मेरे को ऐसे लग रहा है वील गो बैक टू फेबिनो, हेंडो एंड थियागो. होने को obviously हो सकता है, मगर I think yeah, I would start Navigator in this one. चलो, मैं तो prediction करूंगा नहीं. You guys, what is the prediction? निष्ठा, योर प्रिडिक्शन. लेट्स हियर. Uh, लेट्स हियर. 2-1 to Liverpool, I think. You guys, like Mana Oh. said, the moments. There will be more moments for Liverpool because Wolves aren't very polished at the moment. Time लगेगा थोड़ा उनको, but yeah, for now I think you guys win. ओ मैं एकदम फुल ईमो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ. 3-0 लिवरपूल. गेट इन देयर लैड्स. लाइक Ah. Nunes Nunes scores early on, and Gapco scores as well. This is the game, boys, where we turn our season around. Get in, come on, come on. चलो चलो. Ball Danish. Okay. This is the यहीं से तूने टीम टॉक देना शुरू कर दिया. बट चलो, कुछ और. नहीं नहीं, लेकिन निधि निधि कब तक हम लोग डाउन होंगे एंड आउट होंगे. कुछ स्ट्रीम पे अगर खुश नहीं रहे तो कब खुश रहेंगे भाई. भाई मैं लेट्स. खुशी हूँ, तेरे हाँ को लग रहा है हाँ. क्या कि मैं दुखी हूँ? नहीं नहीं, मैं मतलब मैं बोल तो रहा हूँ कि बस. बस हो गया. हाँ. दिस नेगेटिविटी आउट ऑफ द विंडो. लेट्स फकिंग विन अ गेम. लेट्स स्मैश आवर ओपोनेंट्स. लेट्स या. गेट बैक ऑन ट्रैक. 1122 wife says Suraj. Harsh says a draw. Wolves, Agam going with the tradition. Lopetegui का गोल प्रेडिक्ट किया Nobody उसने. scores. बायोटेक, हाँ भाई, मैं तो आई विल स्टार्ट बायोटेक. आई वुड स्टार्ट बायोटेक, केटा एंड बायोटेक, केटा एंड थियागो, ऑफ कोर्स. दैट्स माय मिडफील्ड. 1172 says Aryan. Uh, long no, Neves long ranger coming. 2-1 Wolves, 2-1 Liverpool says Hassan. I would चलो love to अब. see that. हाँ.
अब पूछा बात कैसे? करते हैं पूछा कैसे? न्यूकासल। पूछा किसका? मुझे स्ट्रीम पे बुलाए इसीलिए गया है, ओके। सो पूछा, डेफिनेटली पूछा। मानस स्ट्रगल्स विद दैट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, न्यूकासल वर्सेस वेस्ट हैम। अरे भाई भाई वेस्ट भाई, हैम को क्या हो गया निष्ठा? लाइक ओ ब्लडी गॉड। डेक्लन राइस, लुकास पकेटा, थॉमस सुचेक। सेम क्वेश्चन निष्ठा, आई विल स्टार्ट विद यू दिस टाइम। क्या चक्कर है यार ये वेस्ट हैम के साथ? ये मोएस का प्रॉब्लम है। और कुछ नहीं बोलूंगी और कुछ बोल भी नहीं सकते। ये मोएस का प्रॉब्लम है, उसकी हवा निकल गई है। He's out of ideas, I think, because with players like Declan Rice and everything, you can't be struggling this much like mid-table. Tak I can understand, because I think they had like a meteoric rise and even faster crash after like last season or so. Matlab, why? Like, I don't even feel like wasting my brain cells thinking about West Ham, because I saw this coming from a mile away last season. I was like, ये जितना ऊपर जा रहे हैं उतना जोर से गिरने वाले हैं, because David Moyes does not have the like David Moyes doesn't have the ability to back up a good streak with smart moves. उससे नहीं होगा। जी अटक गया क्या? आई थिंक अटक नहीं 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 नहीं, मतलब निधि शायद से अटका है। गया। हाँ, I was निधि like, why is he glaring at me for my screen? निधि का भैया, मतलब डेविड मोइस, maybe he's overstayed his welcome, and I think इसका second time डेविड मोइस को वापस आया ना वेस्ट हैम, like he was sacked then he's got back again. I Oh think God, David really? Moyes, I don't हाँ remember हाँ, this. David Moyes was the West Ham manager, then he got the sack, now he's back again. So Wow. Okay. and like, with all due respect, like, आप लुकस पकेटा आया है, like I don't see David Moyes managing Lucas Paqueta, like वैसा वाइब He's नहीं out of आता मेरे को। ideas. या एंड देन लास्ट सीजन भी जैसे दे वर इन द यूरोपा लीग, आई थिंक यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग में थे You're in वेस्ट हैम, Europa, I think. Europa, and they did really well. They reached deep in the competition. So yeah, I mean, I think they're out of depth. It will be a crying Big shame to time. see West Ham go down, but it is Yeah. possible. It is very possible. अरे I won't यार count that हंसो out at यार, that moment. हंसो 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 हंसो। हाँ, ये भी, like even this signing has not worked. Like Hmm. निधि ने एक स्टैट बताया था कि हाउ मेनी अटैकर्स हैव दे साइंड निधि इन द लास्ट, हु यू वर ओनली सेइंग ना कि Last 10 years, last 8 seasons or 10 seasons, they've signed 59 strikers. West Ham. अटैकर्स, What? हाँ, It is अटैकिंग unreal. प्लेयर, It is unreal. मैं एक बार It कंफर्म seems करता हूँ, but too. it is Wow. अटैकिंग प्लेयर्स which could be your attackers, like not strikers. Sorry. Jared Bowen type players, Yeah. Yarmolenko, Wow. like these type of players, Yarmolenko, Jared Bowen, Antonio, Andy Carroll, सब तो sign किए वो लोग ने यार, and it has Wow. never happened for them. है Yeah, I mean, probably ना? like a relegation will be the hard reset that they need now, I guess. That's the only good thing that will come out of how. If West Ham go down, that's the only good thing that will happen to them, a hard reset. Bas, that's it. जी, वेस्ट हैम जी तो बताइए। यार, आप बिड करो, हम बात करेंगे। मतलब आप तो वैसे भी वैल्यूएशन से ऊपर पैसा देते हो, सो आप बिड करिए, हम बिल्कुल बात करेंगे। बट हाँ, डिस्टर्ब prediction Newcastle West Ham. Obviously, will you go Oh, for a I am not going for anything but a Newcastle win. 2-0 minimum. I Newcastle? don't तो see अलग West ही Ham scoring against Newcastle. What defense? What is that defense? What is going on with Newcastle? Like, wow. Wow. और वही बात है ना यार, इफ यू डू द बेसिक्स राइट, हम लोग ये सब बात कर रहे हैं न्यूकासल के बारे में, वुल्फ वेस्ट हैम के मिडफील्ड की बात की, वुल्व्स के मिडफील्ड की बात की, बिग नेम्स Yeah. राइट। लेकिन अब देखो यार, मतलब अगेन दिस इज नॉट टू से कि लॉन्ग स्टाफ खराब प्लेयर है, बट लॉन्ग स्टाफ को देखो क्या सही खेल रहा है। अगर आप प्रीमियर लीग Yeah. टॉप प्रॉमिसिंग मिडफील्डर्स की लिस्ट बनाओगे, तो उसमें आप, आई डोंट थिंक यू विल इंक्लूड लॉन्ग स्टाफ, बट लुक एट हाउ इज प्लेइंग।
Yeah, oh my That's the thing, God, yaar. so good. Belief and right. If you do the basics right now, so I think it's a big thing. Newcastle, yaar. I again, I think definitely Newcastle will win this. Yeah. And if they Sim- win, then I mean, it's a scary prospect for us because we've got to see them in the finals. Straightforward यार, Newcastle will win, and I think scary prospect तो है ही for Manchester United. That game in Wembley, I think atmosphere wise, Nishtha, it is going to be one of the best, because Absolutely. United after 6-7 years, Newcastle after 40 odd years, they can win a Yeah. trophy or even more. So भाई वो मैच तो लीग कप का मजा मैच, आने और वाला है. हाँ मतलब मजा आएगा. At the end of the day, Yeah. United is going to win a trophy, right? Which United पता नहीं, but Which United? We don't know that yet. हाँ, बट But ये I can't गेम wait आई for थिंक that. न्यूकासल 2-0 3-0 टाइप्स. So on. So on. या लास्ट गेम. निधि, यू वांट टेक द लास्ट गेम या तू अटका है वापस? He's back. अभी है Bhai, निधि my का. my Wi-Fi is acting up like anything. हाँ, ओके ब्रदर, थैंक यू. अब आई डोंट नो हाउ टू टेक दिस कमेंट, बट ठीक है. लाइक लाइक आई डोंट इवन नो व्हाट ये टू क्या से. बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मतलब सुबह सुबह ही शुरू हो गए पब्लिक. स्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, द लास्ट गेम ऑफ द गेम वीक. We will be speaking about this and then we'll go tata bye bye. Everyone has to work. Spurs Man City, usually Spurs cause Manchester City problem. ये सीजन भी एतिहाद पे 2-0 की लीड ले ली थी हाफ टाइम पे, तो वहां से 4-2 जीत गए मैनचेस्टर सिटी. निधि, स्पर्स हमसे बहुत आगे हैं फिलहाल. हम्म. कैसे मेरे को पता नहीं, बट हैं. वो कुछ खास खेल नहीं रहे खुद. क्या लगता है गेम के बारे में निधि? यार स्पर्स का भी देख, ऑब्वियसली हम हमारे कंपैरिजन में तो दे हैव बीन ग्राइंडिंग आउट विंस या ड्रॉज भी. अगर Hmm. ब्रेंटफोर्ड वाला भी बोलेगा तो 2-0 था, फिर 2-2 कर लिया. देर क्यों सीजन के स्टार्ट में देर आर एटलीस्ट 3-4 गेम ऐसे मिल जाएंगे जो निकाल लिए हैं स्पर्स ने. आई थिंक उस पे है. बट बाय द वे कॉन्टे हैज हैड सम रियल हेल्थ प्रॉब्लम, सो ही या वोंट Yeah. बी. या सो Yeah. उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा. I like Spurs has been a bit of a bogey team for Man City over the last few years. Having said so, I feel that अभी उनके पास the Terminator Haaland है, and I think he is back in his scoring mood. So I feel that Man City will take this easily. Spurs का थोड़ा problem और compound होगा. Obviously, अगर हम थोड़ा अच्छा से खेलें तो it can be good news for us, but it's not so much for us. But अगर मैं आइसोलेशन में देखूं तो ऑन पेपर तो आई थिंक इट शुड बी अ इजी विक्ट्री फॉर मैन सिटी. बट मैन सिटी का भी देखना पड़ेगा भाई. इट सीम्स दैट देयर आर सम सीड्स ऑफ डिसकंटेंट व्हाटएवर. मतलब कैंसेलो छोड़ के गया है, apparently Hmm. Bernardo Silva has asked to leave. So there's like a lot going on at Man City also. आई थिंक दिस गेम वीक विल बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज वो न्यू मैनेजर बाउंस जो हमने बात किया था, एवर्टन वर्सेस आर्सेनल, एंड आई थिंक स्पर्स वर्सेस मैन सिटी. दिस इज अ क्रूशियल गेम वीक. यूजुअली मैन सिटी स्ट्रगल अगेंस्ट स्पर्स, एंड आई थिंक किसी ने ऊपर लिखा है कि मैन सिटी ने कभी स्पर्स को हराया नहीं इनके नए स्टेडियम में. आई पर्सनली थिंक दिस विल बी सिटी टू विन, and Yeah. this will be a game week where they close the gap further to Arsenal. मेरे को ऐसा वाइब आ रहा है कि टाइटल रेस में इंपॉर्टेंट गेम वीक है बिकॉज ऑफ दीज टू फिक्चर्स. आई थिंक मैन सिटी के लिए साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ी बात होगी. वो लीग टाइटल्स बहुत जीते हैं यार, बट लीग टाइटल्स वो बहुत जीते हैं, बट दे हैव नेवर बीन एबल टू beat Tottenham in Tottenham. So I think this would be the time. I am going for a Manchester City win. I am going for 2-0 Man City to win. Haaland race. That's my prediction. At some point Hmm. I want to see Julian Alvarez play यार. मतलब even though He he is plays starting. for like, हाँ, I want to see him play यार. मतलब वो obviously हालैंड के ऊपर वो नहीं खेलने वाला है, let's be honest. मगर थोड़ा मेरे को देखना है यार. जूलियन अल्वारेज मेरे को वर्ल्ड कप में तो बहुत सही प्लेयर था. तो Yeah. मतलब
speaking as a neutral, I would want to see him. I wish we get to see Julian Alvarez play this game. I think man's last दो game Nidhi, I think they both have started, Hmm. which is rather surprising. I think Wolves के against में वही lineup देख रहा हूँ. निष्ठा तेरे को क्या लगता है गेम के बारे में? यार एक तो ना दोनों टीम्स का अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है. अप अपने ही अंदर they are having a lot of issues Yeah, going on. Spurs seem correct. very down motivationally, and Conte not being in the stadium is going to definitely affect them. But ये Cancelo going, Bernardo Silva wanting to go, पहली बार ऐसा since Pep has taken over, this amount of discontent inside a City squad is quite interesting to see. So अभी मेरे को लग रहा है City is going to walk it. See, Spurs doesn't make it easy for them anyway, but I don't think City is going to lose. This is going to be the first time. If they haven't won at the new stadium, this is it. They won't have a better chance than this. And I think they have a better motivation with the sense of keeping the title race alive. क्योंकि अगर ये हार गए ना, then it's तो फिर almost a done thing that Arsenal's winning. This is going to be a make or break for City. So they'll have to keep all of the internal bullshit aside and just like band together and grind a couple of goals out. But get to बहुत easy term है against Spurs when it comes to City. But yeah, they'll स्पर्स have का to भी do it. वही है ना So कि 2-0. कॉन्टे शायद से वोंट साइन अ न्यू डील. केन का क्या है? हम्म. बीच Yeah, में रूमर्स yeah. आया था केन शायद से विल साइन अ न्यू डील, बट अगर कॉन्टे नहीं है, अगर वो चैंपियंस लीग में नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा यार. मतलब स्पर्स भी एक फ्लक्स में ही है फिलहाल. Yeah, दे true. दे हैव आल्सो लाइक ना स्पर्स ने क्या पेड्रो पोरो साइन किया. बाय द वे ये भी तो है ना स्पर्स के नए साइनिंग थे पेड्रो पोरो, डैंजुमा. वी आर Oh, फॉरगेटिंग दीस टू yeah. प्लेयर्स. Right, right, पेड्रो Oh, right, पोरो. right, right, right. So they might Danjuma, feature. man. I don't know what kind of impact they will have. बिकॉज Yeah, एक चीज तो है मैनचेस्टर सिटी का. फॉर ऑल दे आर ग्रेट यार. मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, दे आर एन अमेजिंग टीम. बट अगर आप थोड़ा ब्रेव होते हो ना सिटी के अगेंस्ट, आपको चांसेस मिलते हैं एट देयर गोल. सो yeah. अभी पेड्रो पोरो और डैंजुमा खेलेंगे. कैसे खेलेंगे? हाउ विल दे फिक्स? बिकॉज अगर कुलिसेव्स्की, सॉन, केन फिट हैं, सो यूजुअली दे स्टार्ट. Where will Danjuma fit in this? Where will Pedro Porro fit in this? So I am very excited for this game, but I think City 2-0. Yeah. I am सहमत with this scoreline as well. आई थिंक मतलब जैसे मैंने यूनाइटेड का बोला ना, आई थिंक बहुत टफ रहेगा. स्पर्स बहुत तंग करने वाला है, बट आई थिंक सिटी विल विन इट. Yeah. Is this the only time स्पर्स we are डू. all in consensus about a scoreline? या या बाय द वे मानस, Wow. अगर जो तूने प्रेडिक्ट किया है, जस्ट टू रैप इट अप, अगर तूने जो प्रेडिक्ट किया है कि एवर्टन जीत गया, देन दिस गैप इज 2 points with Arsenal having one game in hand. And they both have Wow. to face each other twice. Wow. Twice. Yeah, if that happens. It can happen, yaar. Matlab, I see. I again, I'm not trying to be जादू तोड़ने नहीं कर रहा हूँ, but I think Arsenal का एक ही they've lost one game, यार. They've drawn two. You know, they are on course to reach 100 points if they maintain this. That is unfucking believable. I think they can win the league, but I think Inca they can't sustain this sort of form for another 19 games. So kidhar na kidhar they will drop points. This could be a game. That's when because of the new manager bound Sean Dyche, Goodison Park, मेरे को लग रहा है शायद से कुछ उधर अपसेट हो. वो मेरा एक अपसेट है. अगर आपको एक आउटलैंडिश अपसेट बोलना है, प्रिडिक्शन देना है, वो मेरा प्रिडिक्शन है. सो इफ दैट हैपेंस 2 पॉइंट्स गेम ऑन ब्रो. फिर तो गेम ऑन है भाई. मजा आएगा. हम तो 29 पॉइंट से फिलहाल शर्म आ रही है यार. 29 पॉइंट से By जीत जाएंगे तो. by unless Iota bro, unless Cancelo and अगर unless एक combined team बन जाए Bayern Man City की, what you're saying is not possible, brother. Cancelo assist. Cancelo कहाँ Wow. से मतलब Cancelo अब माने को असिस्ट करेगा. अब किधर हालैंड को असिस्ट कर रहा है Wow. वो. बट निधि भाई बट का बट टीम. देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी इफ वी विन
We go on 32 points, which, and if Tottenham lose, we have played 2 games less than Tottenham. Okay, if भाई we win, we are so close to Tottenham. We are 4 points behind Tottenham with 2 games in hand. मैथ सब काम कर रहा है. प्रॉब्लम ये है कि वी आर अ स्टूडेंट विच इज गुड इन आर्ट्स एंड दैट इज द आर्ट ऑफ फकिंग इट अप. ठीक है. सो मैथ, देख मैथमेटिकली वी आर नॉट आउट, मगर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ग्राउंड रियलिटी अलग है. ये बट या अगर जीत गए तो मतलब एज अ फैन तो ऑब्वियसली यू विल वांट कि जीतो और वहां से यू गो ऑन अ रन, बट लग नहीं रहा है देख के. Yeah. मुश्किल का तो पता नहीं, बट डिफिकल्ट जरूर है, इन द वर्ड्स ऑफ कपिल देव, राइट? यस बिल्कुल वैसे ही है. मुश्किल का तो पता नहीं, बट डिफिकल्ट तो जरूर है. डिफिकल्ट जरूर कहेंगे. यस. हाँ. बट यस. यही था यार इसका स्टेट ऑफ प्ले. थैंक यू सो मच निष्ठा फॉर योर टाइम. Always, man. It's always a pleasure to be on this stream, and it's so much fun. मुझे लगता ही नहीं है स्ट्रीम कर रहे like ऐसा. Just But like कब, when are you sitting here. when are you when are you calling me and Nidhi to that side of the town to grab a few beers and No, we need to call Nidhi to this town first and then talk about that side, this side, ye wo. Nidhi, when are you coming to Bombay? We definitely need to hang. And Manas, next मोस्टली week, next to next week, आ जाओ, for sure. मोस्टली इन अप्रैल. बाबा, अभी तो फेब चालू हुआ है. हाँ ओ, मोस्टली इन अप्रैल ओ. आऊंगा मैं. ये तो मतलब ऐसा I'm flying from US, coming in April वाला vibe आ रहा है. कुछ चाहिए हाँ, क्या? चॉकलेट. यू देख देख मतलब मिडफील्डर छोड़ चाहिए ना. भाई. हाँ मिडफील्ड छोड़ ना. मैं वाइट फील्ड में रहता हूँ, मतलब जितना जितना मेरा फ्लाइट का टाइम नहीं होगा उतना टाइम तो मेरे को एयरपोर्ट पहुंचने में लगेगा. अरे वो पीछे वाला रास्ता है ना. Come on, dude. You'll reach in like हाँ 45 minutes. वो तो है. Come पीछे on. वाला अभी रास्ता ऐसे बोल रही है जैसे मैंग्रोव से 5 मिनट तू क्रॉस करके पहुंच जाएगी. भाई ऐसा अभी उधर भी This is जाम लगने Bangalore वाला है. experience talking, okay? है एक रास्ता है. Nidhi is making it sound like he'll have to cross through the city. He doesn't. वो भी उधर भी अभी ट्रैफिक जाम लगने लगा है. एनीवे छोड़ो, ये तो अपना प्राइवेट वो कॉन्वर्सेशन चलता है, रहेगा. वो बाद में करेंगे. बट थैंक्स यार, थैंक्स निष्ठा, थैंक यू फॉर You're most डूइंग दिस. welcome, बहुत guys. मजा आया, Always a pleasure. बहुत मजा आया. एंड थैंक यू एवरीवन जिसने भी ज्वाइन किया. निधि भी भैया नीड्स कैम. यस लिवरपूल आल्सो नीड अ कैम. बट देखते हैं क्या होता है. ठीक है पब सो क्रॉल करो. हाँ पब पब क्रॉल क्रॉल. आ करो. जाओ भाई, आ जाओ. मतलब मेरा पब नाम की तो माँ भी नहीं कर दिया. मननस क्या मतलब? मनन्स. मनांस Sir, please, मनांस. are you seeing my name? Please. नितिशा. नितिशा. निशांत नीतीश. नहीं बोला तब तक ठीक है. I'm good. Thank you. निशांत. ओहो. जाते जाते एक 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 लिवर वन. Liver one. लिवर तो एक ही है भाई, उसको तो संभाल liver के one नहीं, रखना है. लिवरपूल है वो. Thanks, Renuka. All right, guys, let's just end this. All Please right. do like this stream and subscribe to Menace the Monk if you haven't yet. We'll see you again soon. हमारा एक वीडियो आ रहा है अभी मो साला के ऊपर. द आउटरेजियस रूमर्स ऑफ मो साला ज्वाइनिंग PSG, उसके ऊपर एक वीडियो बना है. प्लीज देख लेना, guys. Until then, guys, cheers and up the Reds. Bye bye. बाय बाय.